Hello children, good morning everyone. Today we will discuss the question answer of the poem Where All the Teachers Go by Peter Dixon. Answer this question deeply. Question number 1. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? दिस क्वेश्चन मीन्स पोएट ये क्यों जानना चाहते हैं कि टीचर्स जो है वो 4 o'clock के बाद कहाँ पे जाते होंगे. आंसर. द पोएट फील्स द टीचर्स हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ फ्रॉम एवरीवन एल्स. Hence, he is curious to know where the teachers go after school hours. Question number 2. What are the things normal people do that the poet talks about? This question means the poet wants to talk about what are the things that normal people also do. ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल पीपल यूजुअली अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं, कौन से काम हैं. आंसर. द पोएट सेज दैट नॉर्मल पीपल लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेज विद देयर फैमिलीज. They wear pajamas and watch TV in the evening. They wash their own clothes and often pick their noses. Question number 3. What does he imagine about? Means what does the poet imagine about? Number A. Where does live? What does the poet imagine about where teachers live? Answer. The poet is curious to know if the teachers live in ordinary houses as everyone else. Number B. What they do at home. The poet wants to know about teachers, that what they do at home. Answer. The poet wonders if the teachers wear pajamas and watch TV. पोएट को ये आश्चर्य लग रहा था जब ये सोचते थे कि क्या टीचर्स भी ऑर्डिनरी पीपल की तरह घर पर पायजामा पहनते होंगे, टीवी देखते होंगे, देन अपने खुद के कपड़े धोते होंगे, एंड पिक देयर नोजेस लाइक अदर पीपल व्हेन दे आर एट होम. नंबर सी. द पीपल विथ होम दे लिव. The poet also wants to know that the people with whom the teachers live. Answer. The poet wants to know if teachers live with their families and whether they too have moms and dads. D. Their activities when they were children in school. In this poem, Peter Dixon also wants to know that what the activities the teachers would have done when they were children in school. Answer. The poet wants to know if the teachers ever lost their books. पोएट ये जानना चाहते थे कि क्या टीचर्स भी जब स्टूडेंट्स होंगे तो अपनी बुक्स खो देते होंगे, क्या वो भी डेस्क पर डिफरेंट टाइप्स के मार्क्स बनाते होंगे पेन और पेंसिल से, क्या टीचर्स भी जब बच्चे होंगे तब स्पेलिंग मिस्टेक करते होंगे, they have made spelling mistakes, and were they ever punished for being mischievous when they were children in school. These all activities the teacher have done or not, these things the poet wants to know. Question number 4. Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? Answer. To the poet, a teacher is perfect. He feels that the life of a teacher is very different from that of everyone else. जो पोएट थे वो ऐसे फील करते थे कि टीचर की जो लाइफ है वो सब लोगों से बिल्कुल अलग है, एंड टीचर जो है वो सबसे परफेक्ट है. Hence he wonders if the teacher does things that other people do. How does the poet plan to find out? What will he do once he finds out? Answer. The poet plans to follow one teacher home to find out about their life after school hours. पोएट ने क्या प्लान किया था? पोएट ने ऐसे बोला था ना कि मैं एक दिन एक टीचर के घर पर जाऊंगा, उनको फॉलो करूंगा टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ.
he says that once he knows that what they do, he would write a poem about them. तो बच्चों, आपको भी कभी कभी अपने टीचर्स की पर्सनल लाइफ में जानने की इच्छा होती होगी। कभी कभी आप टीचर्स को मार्केट में घूमते देखते होंगे, या टीचर्स को पानी पूरी की लारी पे आप पकौड़ी खाते देखते होंगे, तो आपको कभी कभी हंसी आती होगी। पर बच्चों, टीचर्स की भी पर्सनल लाइफ होती है, वो भी आपकी तरह फैमिली में रहते हैं, उनके भी मॉम डैड्स होते हैं, एंड उनका चाइल्डहुड भी आपके जैसे ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दिस phrases फ्रॉम द पोएम मीन? Here two phrases are given. Number 1, punished in the corner. What is the meaning of this phrase? Asked to stand in the corner of the classroom as a punishment. जब हम किसी बच्चे को पनिशमेंट के तौर पर कॉर्नर पे खड़े रहने को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड पनिश्ड इन द कॉर्नर. Number 2, leave their greens. What is the meaning of this phrase? Means children often leave leafy and green vegetables on their plate as they do not like them. कभी कभी आपकी मम्मा पोहा बनाती होगी या तो और कुछ भी खाना बनाती होगी, तो आपकी आदत होती है ना, ग्रीन चिली जो होती है वो आप, या तो फिर करी लीव्स होते हैं वो आप उठाकर साइड में रखते हैं, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, लीव देयर ग्रीन. मीन्स चिल्ड्रन ऑफन लीव लीफी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन देयर प्लेट एज दे डू नॉट लाइक देम. It's called leave their greens. Then students, here we have completed the question answer of this poem. Please write this question answer in your notebook with clean and neat handwriting. Bye everyone. Thank you.